Hello guys, now we are learning about the React model. React model also known as the Rapid Application Development Model because it's rapidly or we can say that as per the name, they will be fast and high quality software products will be designed using a reworkshop or workshop like a prototype and early that reiterative user testing of these of designs, the reuse of software components, less formality in reviews and other team communication. So they will be design that product in a fast manner. Fourth, we can learn about the iterative model. In that iterative model, we are see an iterative model is an application will get divided into small parts and the development will be done by specifying and implementing on the small parts of that software in which we can review to identify further requirements. जिसका मतलब होता है कि जो भी मॉडल होता है ये इटरेटिव मॉडल होता है वो एप्लीकेशन को डिवाइड करता है जो छोटे छोटे पार्ट में जैसा वी कैन से दैट जैसा मेक माई ट्रिप का एक एग्जांपल लेते हैं उसका मेन मॉड्यूल अलग रहेगा उसके सब मॉड्यूल्स अलग रहेंगे फॉर दैट एग्जांपल वी कैन कैरी दैट लॉगिन फंक्शनलिटी अलग रहेंगी उसके बाद में जो भी उसके मॉड्यूल्स रहेंगे वो सब इसमें डिवाइड रहेंगे जैसा ट्रेन मॉडल प्लेन मॉडल ये सब जो होता है होटल से लेके each and everything they will be divided into each and every specifying or implementing small parts or small division which can be reviewed or to identify further requirements जो भी है उसके अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही काम करेंगे this process is repeated creating new version of that software for each cycle of the model जो भी उसमें अपग्रेडेड जो मेक माई ट्रिप है उसमें हमेशा न्यू वर्जन आते हुए मिलेंगे जैसा उसमें जो भी है उसके लोगो से लेके लोगो मीन्स उसके अंदर वाले लोगो से लेके जो भी चीज़ें हैं वो पूरी तरह से अपग्रेडेड मिलेंगी उसमें जो फंक्शनलिटी है वो भी अलग अलग मिल सकती है सो दैट दे नीड टू रिक्रिएट रिपीटेड और क्रिएटिंग न्यू वर्जन then iterative model is very simple to understand and use this model we can't start developing the complete software with full specification and requirements. Fifth one देखेंगे prototype model. In that prototype model, it is a trial version of that software. It is a sample product but designed before the starting actual testing. ये जो प्रोटोटाइप मॉडल होता है वो मेन मॉडल जो भी एक प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका सैंपल मॉडल बना करके ही हम ट्रायल करके उसको बाद में वो जो रियल प्रोडक्ट होता है उसको बनाते हैं इन दैट प्रोटोटाइप मॉडल व्हेन यूजर रिक्वायरमेंट आर नॉट वेरी क्लियर जिसका मतलब है कि यूजर रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होती सो वी आर मेक दैट डमी प्रोडक्ट और डमी software we can set that so the user will be understand actually they want like that or not after the their confirmation or we can say sign up they will be we will be designing that product as per the client requirement and this software is tested based on the raw requirements obtained from the user and available types of prototyping and rapid increment evolution and extreme that four phases we can use which is rapid incremental evolutionary and extreme that prototype model will work like we will take the basic requirement from the user side we will take basic requirement what they actually want or what they thought about that product what they want so we'll be get that basic requirement from the client side then based on that discussion we will create that initiative प्रोटोटाइप लाइक अ प्रोटोटाइप इज अ रीवर्किंग ऑफ दैट मॉडल जिसमें हम काम करते हैं जो भी जो डमी डेटा हम लेते हैं क्लाइंट साइड से उस पर हम पहले बना के देखते हैं बाद में उसको हम क्लाइंट को भी बोलते हैं कि उस पर यूज करके देखो सो वंस वी वर्किंग दैट प्रोटोटाइप इज बिल्ड वी विल आस्क टू दैट क्लाइंट टू चेक and use it. Next step will be use that test and enhance
इसका मतलब है कि हम उसको टेस्ट भी करते हैं और इनहांस भी करते हैं जिसमें अब कुछ अपग्रेडेड हो तो देन अगेन वी विल call the user to check it, use it, and again we will make changes as per the user feedback. जो भी चेंजेस करते हो यूजर के थ्रू ही यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही करते और उसे यूज करने को भी लगाते हैं देन यूजर फीडबैक अंटिल द वी गेट ऑल द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द यूजर साइड अगर उसको जब तक का लगता नहीं ये उसके लिए सेटिस्फाइड है और उसको यूज जैसा मेडिकल फार्मास्यूटिकल बोल सकते हैं हम जो भी रिक्वायरमेंट्स उसके हिसाब से ही काम करेंगे उस हिसाब से हम वो प्रोटोटाइप डिजाइन करते हैं उसके बाद भी हम उन्हें हैंड ओवर करते हैं once all requirements are fulfilled the client will be agree then last step will be a sign off जिसका मतलब है कि अगर पूरा उसने समझ लिया और उसको हैंडल करने के लिए क्लाइंट एग्री हो गया उसके बाद ही हम उसको साइन ऑफ करते हैं और उसके पे काम करना चालू करते हैं advantages of prototype model user are actively involved in that development yes client always actively involved on that development phase because they know that product or what they actually want they also learning about that product so there is a user is a most important part of that prototype model missing functionality can be आइडेंटिफाई इजीली जो भी मिसिंग इंफॉर्मेशन है और फंक्शनलिटी है वो क्लाइंट के हिसाब से ही हम ऐड कर सकते हैं उसमें जो इसमें आ जाता है बेस्ड ऑन यूजर फीडबैक द सिस्टम requirement specification document is finalized which is called as SRS document then disadvantage of that prototype model sample model is not used for the actual implementation जो डमी प्रोडक्ट होता है वो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं होता है देन स्कोप ऑफ दैट सिस्टम में एक्सपर्ट बियॉन्ड ओरिजिनल प्लान्स जो भी स्कोप होता है वो आफ्टर द ओरिजिनल प्लान्स के बाद में ही हम एक्सपांड कर पाते हैं now we are learning about the V model in that V model in a parallel to software development phase the corresponding series to test phases इसमें जो भी होता है वो वेरिफिकेशन से लेके वैलिडेशन तक का जो भी है एक जिस तरीके से प्रोडक्ट चलना चाहिए वो हम वे मॉडल में देखते हैं ईच स्टेज एंश्योर दैट स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ टेस्टिंग इज डन इसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है टेस्टिंग का जो भी है रिक्वायरमेंट गैदरिंग होने के बाद में भी जितना भी बीआरएस बिजनेस रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन ले लो कहीं से भी या क्लाइंट का जो भी है डेटा रिक्वायरमेंट है वो उठा करके उसके बाद में जो भी फ्रॉम द कोडिंग पोर्शन टू दैट यूएटी जहाँ तक हम सर्वर पे अपलोड करते हैं वो पूरा इसमें ही आता है वी मॉडल में दैट वंस दैट टेस्टिंग इज पास्ड ओनली देन द नेक्स्ट फेज स्टार्ट जिसका मतलब है कि जो बीआरएस एक कोई भी सिस्टम अगर हम लाइक कोडिंग ले लेते कोडिंग का पार्ट कंप्लीट होने के बाद में ही उसका टेस्ट होने के बाद में ही जैसा कोडिंग का पार्ट डेवलपर टेस्ट करेगा so they will be attested their data will be designed as per the user requirement और actual और एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुई है या नहीं जो सिस्टम इंजीनियर ने डिजाइन की हुई है एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद में देन व्हेन द रिक्वायरमेंट इज वेल डिफाइंड एंड एम्बिगियस जिसका मीनिंग है कि अनसर्टेन होता है कुछ थिंग्स वो पूरी डिफाइन हुई है या नहीं उसको चेक करने में भी मॉडल काम में आता है इट इज ऑल्सो नोन एज वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन फेज राइट in that verification and validation we can say that BRS from the verification in that verification phases that BRS first come then SRS then HLD LLD levels and coding from the coding they will be test coding the what developer test that we can say that also known as unit testing in that unit testing the developer are check their code from they will be actually make that designing or make that and the product will be as per the user requirement or not so the
developer will be there. So in that white box testing, we can say that developer are always welcome to that code. They will be understanding study or designing that portion. Then after the HLD or LLD level, in high level definition, they will be design one model to another model will be integrated or not. In that integration testing, they will be checked. Then system requirement specification. In that system requirement specification, they will be designing the system testing. Then after the BRS or SRS, they will be actually what they actually client want, so they will be test on the user acceptance testing. In that validation phase, that is the main V diagram. We will be understand about that verification to validation phase. There will be a black box testing also and white box testing also. We will done in that verification phases. The designing phase, verification check that whether we are building the right product or not, to check whether the specific requirement will meet or not. Focus on documentation. Testing the project related document are called as static testing. Then verification does not involve the code execution. Verification typically involves static testing technique like a review, walkthrough, and inspection. Then after there is a various phases like a verification phase in V model BRS, which is business requirement specification. This is a step where the product requirement are understood from the customer side. जिसका मतलब होता है कि जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है वो बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में हम क्लियर कर लेते हैं. दैट पेज कंटेंट्स डिटेल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दैट, अंडरस्टैंड द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन and exact requirement. Then SRS software requirements specification. In that stage, कौन सा सॉफ्टवेयर लग रहा है और कौन से हार्डवेयर लग रहे हैं ये हम चेक कर लेते हैं. दैट सिस्टम इंजीनियर्स एनालाइज दैट ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस ऑफ द प्रोसेस proposed system to SRS by studying their user requirement document. Then after the HLD, high level designing. In the high level designing, explain the architecture that what we use to develop the system. जिसमें हम क्या यूज करने वाले और कहाँ से स्टार्ट करने वाले वो हाई लेवल डिजाइनिंग में हम डिफाइन करते हैं. उसके बाद में द आर्किटेक्चर डायग्राम, जिसका मतलब है कि सीनियर जो आर्किटेक्चर होते हैं या सीनियर इंजीनियर होते हैं वो आर्किटेक्ट करते हैं दैट डायग्राम कि फर्स्ट मॉड्यूल में क्या फर्स्ट क्या दिखेगा उसका लोगो. देन लॉगिन, फॉर एग्जांपल वी आर गेटिंग the MNT make my trip. Then their login functionality like a email ID, password, and login button we can put there on the first page. Then in initial page, in after another page we can consider that. So whole diagram will be designed that in a high level designing document. After that LLD, low level designing. In that module design, in that they will be break into small product like a plane model, train model, hotel, etc. Comes in that low level designing. That detailed study about that high level designing, we can say that, also known as low level designing. देन कोडिंग फेज आता है. उसके बाद में कोडिंग. दैट आफ्टर द डिजाइनिंग द कोडिंग फेज इज स्टार्ट बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एंड सुटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जिसका मतलब है कि रिक्वायरमेंट पूरी क्लियर होने के बाद में जो भी सुटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होंगी उसमें डेवलपर कोड डेवलप करना चालू कर देता है एज पर द गाइडलाइंस and standard of that coding. Before the checking in the respect repository, the final build is optimized for the better performance. जिसमें वाइट बॉक्स टेस्टिंग का टेक्निक यूज किया जाता है जिसमें डेवलपर खुद ही टेस्ट कर लेता है कि वो कोड एज पर द रिक्वायरमेंट चल रहा है या नहीं, और जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से काम कर रहा है या नहीं, और जो सीनियर आर्किटेक्चर ने जो डिजाइन करके रखा है उस हिसाब से वो रन हो रहा है या नहीं. जो ब्लूप्रिंट वी कैन सेट दैट the final product is optimized to better performance and the code goes through make code review to check the performance.
ये सब बातें इसमें आती है इन अ कोडिंग फेज. Then a coding validation phase, that testing phase comes. In that validation checks the whether we are building the product or software as per the client requirement or not. They will be checked on that focus of that software. Validation typically involves in actual testing, takes a place after verification are completed. Here we are used the that dynamic testing technique like that यूनिट टेस्टिंग जिसमें हम कोडिंग चेक करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग जिसमें हम चेक करते हैं कि डेटा एक पेज से दूसरे पेज में जैसा इंटीग्रेट हो रहा है या नहीं, जो रिलेटेड है डेटा वो इंटीग्रेटेड हो रहा है नहीं. सिस्टम टेस्टिंग में देखते हैं हम सॉफ्टवेयर बराबर प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, और यूएटी में हम हमेशा चेक करती है ये सर्वर पे कहीं फट तो नहीं रहा. सो वी आर यूजिंग दैट यूएटी टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जो क्लाइंट है वो पूरी तरीके से उसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं और हैंडल कर रहा है या नहीं, वो हम यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पे देखते हैं. उसके बाद में देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ दैट वी मॉडल, जिसमें टेस्टिंग इज इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरी फेज, जिसमें टेस्टिंग हर ईच एंड एवरी फेज में काम करता है. जैसा वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक देख सकते हैं इन दैट वी मॉडल. सो वाइट बॉक्स टेस्टिंग में डेवलपर खुद ही डिजाइन करते समय ही खुद टेस्ट कर लेता है कि वो एक्चुअल में प्रोडक्ट उस तरीके से बन रहा है या नहीं, जो इस तरीके से वी मॉडल जैसा यूजर को होना चाहिए, सॉरी यूजर को रिक्वायर्ड होता है. देन आफ्टर दी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जो ईच एंड एवरी फेज होती है, जैसा इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गया, सिस्टम टेस्टिंग हो गया और यूएटी टेस्टिंग हो गया, ये आता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में, जो चेक करता है एक टेस्टर जो कि ईच एंड एवरी फेज विल बी वर्क प्रॉपरली और नॉट. जिसमें इंटीग्रेशन जो हाई लेवल से लेकर लो लेवल डिजाइनिंग और मॉडल वी कैन सेट दैट सब मॉडल प्रॉपरली वर्क और नॉट. Then the testing or verification take place that early stages. टेस्टिंग और वेरिफिकेशन का काम पहले से ही स्टार्ट हो जाता है दैट वी मॉडल. देन गुड फॉर अ स्मॉल प्रोजेक्ट वेयर रिक्वायरमेंट आर स्टैटिक एंड क्लियर, जिसमें रिक्वायरमेंट क्लियर होती है, जो छोटे प्रोजेक्ट है उसमें ये हम वी मॉडल का हमेशा यूज़ कर सकते हैं, जिसमें समय भी कम लगता है, पैसा भी बचत होता है और प्रोजेक्ट भी इजी वे से बन जाता है. देन टेस्टिंग मेथोडोलॉजी इज लाइक अ प्लानिंग टेस्ट डिजाइनिंग हैपेंस वेल बिफोर द कोडिंग, जिसमें हम गैदर कर लेते हैं पहले ही यूज़र की रिक्वायरमेंट और यूज़र नॉलेज. सो उसको क्या हैंडल करना और क्या बनाना है हम पहले ही प्लान कर लेते हैं. उसके बाद में प्लानिंग का प्रोसेस आता है, जो सीनियर आर्किटेक्चर और सीनियर इंजीनियर बैठ के डिजाइन कर लेते हैं कि इस तरीके से उसका ब्लूप्रिंट क्रिएट करके बना लेते हैं. देन उसके बाद हम डेवलप कोडिंग करके उसको डेवलप कर लेते हैं और टेस्टिंग करके सॉल्व कर लेते हैं, सो दैट दैट विल बी इजी टू हैंडल. अब डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं. डिसएडवांटेज क्या है वी मॉडल के. इन दैट डॉक्यूमेंटेशन इज मोर, सीधी बात है डॉक्यूमेंटेशन पूरा स्टडी करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन इज मोर. इफ एनी चेंजेस हैपन इन अ मेड विद टेस्ट डॉक्यूमेंट अलोंग विद द रैपिड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट चेंजेस होती है उसमें टेस्टेड डॉक्यूमेंटेड में हम वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं अपडेट कर सकते. इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज मोर, जो भी बीए से लेके आखिरी मेंटेनेंस के लिए जाने वाली टेस्टिंग टीम है उसको भी इन्वेस्टमेंट इज मोर. वेरी रिजिड एंड लिस्ट फ्लेक्सिबल, जिसमें पूरी तरीके से एक कठोर होता है ये, जो फर्स्ट फेज से लेके लास्ट फेज तक एक जैसा चलेगा, उसके बाद फ्लेक्सिबल नहीं होता ये, जिसमें हम मॉडल को तोड़ के उसमें बाद में उसके स्प्रिंग में जाके काम कर सकते हैं, उसको बाद में बना सकते हैं, ऐसा नहीं होता है. ये फर्स्ट फेज से लास्ट फेज तक एक जैसा ही वर्क करता है. सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, so no early prototypes of the software are produced. When we use V-model, the V-shape model should be used for the small and medium-sized project, right? That is the most hectic part of that uh, big size project, or we can say mega project. We can say that V model is not able to use, so we can use for the small and medium size project only, where the requirement is fixed as well as their idea also cleared about that project. Experienced technical resources are available. That is the V model which can I study you.
all that things from starting phase to from gathering to that UAT phase. Is waterfall model is and V model is being the same. वी मॉडल इज अपडेटेड फॉर द वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल में हम एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप में जाके ही काम करते थे, इसमें ऐसा नहीं है। हम इसमें गैदरिंग कर लेते हैं इसकी इंफॉर्मेशन, देन उसके बाद हम उसको डिवाइड करते हैं। जैसे कोडिंग का पोर्शन अलग होता है, उसके सिस्टम को क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है वो हम अलग अलग लेवल से डिजाइन कर लेते हैं। सो इसका और ये वे मॉडल अपग्रेडेड वर्जन है वाटरफॉल मॉडल का। स्टैटिक टेस्टिंग टेक्निक, जिसमें हम चेक करते हैं कि तीन वे से हम चेक करते हैं: रिव्यू, वॉक थ्रू एंड इंस्पेक्शन। इन दैट स्टैटिक टेस्टिंग टेक्निक, the review process first come where the requirement, we can say that requirement designing code test plan test cases, we are review that whole from one cycle to another cycle. Then walk through, in that walkthrough process it will be a informal review, we can say that, जिसमें हम कुछ बता के काम नहीं कर सकते और चेक नहीं कर सकते। then not pre-planned can be done whenever required, author reads the document or code and discuss it with peers। also the walkthrough does not have minutes of the meeting। उसके बाद आता है इंस्पेक्शन, इट इज अ मोस्ट फॉर्मल रिव्यू टाइप। इंस्पेक्शन विल हैव अ प्रॉपर शेड्यूल विच विल बी इंटीमेटेड वाया ईमेल टू द कंसर्न डेवलपर टेस्टर। जो भी है वो डेवलपर और टेस्टर के साथ कंसर्न करके ही उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इट विल बी इन विच इंस्पेक्शन list 3 to 8 people sitting, first is a one reader, two writer and three moderator प्लस कंसर्न पीपल। जो भी इसमें कंसर्न होते हैं ये प्रोजेक्ट में वो इंस्पेक्ट करते हैं, जो कि वो रीडर होता है जो पूरा देखते रहता है, एक दो राइटर होते हैं और थ्री मॉडरेटर होते हैं जो उसके ऊपर इंस्पेक्ट करते रहते हैं। दैट इज द रिव्यू। then dynamic testing technique, in that dynamic testing technique we are learning in the next phase। so अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर ऑल।